expert on the subject is tutoring. So, friends, I extend a very hearty welcome to Dr. Antip Kumar Jain on behalf of every one of you. And sir, welcome, and you can take charge, sir. Namaste. Thank you, Ravindra sir. Thank you very much. Good evening to everyone. Namaste. Today our subject is Chinese meridian. We'll compare study with the Byol meridian and the location of the different TCM meridians, pathways, and their locations, also first and last point. Before starting the meridians, can anyone know about the meridians? So many students in the here, second semester, third semester, fourth semesters. Pathways of energy below our skin. Pathway of the energy in the below of the skin, right, Nidhi ji? Okay, anyone? So it's a pathway through which the energy flows in the body. Right, right. Yes. Anyone? So many students here, maybe around 57. Try it. कोई भी बोल सकता है, अगर किसी को लगता है तो प्लीज कोशिश करिए. सर, ऊर्जा का प्रवाह जो एक निश्चित बिंदु से चल के निश्चित बिंदु तक खत्म होता है, जिससे हम डिजीज क्योर भी कर सकते हैं. द मीन्स दैट द डिजीज अकर, दैट डिजीज क्योर, दिस इज ऑल कॉल्ड द मेरिडियन. राइट, ठीक है. अभी ऐसा करना है कि आपको अपने मन से बोलना है ना. जस्ट यू कैन यूज योर माइंड एंड योर सेल्फ थॉट्स rather than any books. Life force energy channel are the called meridian, right? Maybe this is correct. So according to, as per the Chinese system, because Chinese meridian is based on the TCM, this is not in the part of the acupressure, this is based on the acupuncture or the TCM theory. Meridian or channel is a primarily imaging energy pathways. This is not a physical pathways. This is a imaginary pathways. We find out the acupuncture is our traditional methods. Around it is 5,000 old methods. So that time they believe that this is the imaginary energy system. But this time, this is physical system, not in the imaginary system. You can also see the pathway of the meridians. You can also see the एनर्जी ऑफ द मेरिडियंस. अभी ऐसे कुछ सिस्टम्स बन गए हैं जहां पर जो हमारी एनर्जीज के पाथवे हैं, मेरिडियंस हैं, हम उनको कुछ टूल्स के माध्यम से, इक्विपमेंट्स के माध्यम से विजुलाइज कर सकते हैं. इफ यू सी द ऑरा मशीन, कैलीग्राफी मशीन, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द एनर्जी सिस्टम. You can also see the your self energy throughout the calligraphy machine. So meridian is a imaginary energy pathway on the body throughout which qi are the chi's flow. This is also called on the life force, prana, chetana. And the meridian, the body held the functions. The function of the meridians are the pathway of the meridian. This is called on the healthy functions. There are the 14 major channel on the body. These are the also collateral channels. Meridian or the inner side of the limbs are the called yin meridian, and meridian or the outer side of the limbs are called on the yang meridian. Mainly two types of the meridians as per the yin yang theory. The external meridian is yang and internal meridian is yin, or you can also call the internal organ and external organ. Before learning the meridian, you can understand the meaning of the organ and meridians. Both are the different. Both are the not correlated. If anyone is remove their gallbladder,
So they remove the gallbladder organ, but not the remove the gallbladder energy. So energy is inbuilt in the our body. So three yin meridians of the arms in the name of the lungs, pericardium, and the heart. It start the chest and reach the hand. The three yang meridians of the arm, large intestine, small intestine, and triple warmers, being aid the hand to reach the face. These are the commonly our three yin and three yang meridians, जो हमारी हाथ की तीन मेरिडियन हैं. हम कॉमनली ऐसा कहते हैं कि ये तीन मेरिडियन हमारा चेस्ट से स्टार्ट होती है और हाथ की उंगली पे खत्म होती है. तीन यांग चैनल्स जो हमारे हाथ के पीछे की तरफ डोर्सल रीजन से स्टार्ट होती है और फेस पर जाके खत्म होती है. दिस इज अ पार्ट ऑफ द pathway of the meridians. And other three yang meridians, it start to our face, stomach, gallbladder, and urinary bladder. It goes to our toe, and the ending points of these all three meridians in our toes. And the three yin meridian is start. Please mute yourself, Emaji. It start with our toe. There are three yin channels: liver, spleen, and the kidney. It's in the our chest. So this is our circle. If you see the pathway of the energy, कि मेरिडियन हमारी पहले हमारे कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरिडियन चेस्ट से स्टार्ट हुआ, हाथ पे गया, हाथ से स्टार्ट हुआ, फेस पे गया, फेस से स्टार्ट हुआ, पैर के हमारे टो में आके जस्ट पैर के हमारे टोज में ये मेरिडियंस स्टार्ट फिनिश हुआ, लासियांग चैनल, और यहीं से पैर के टो से स्टार्ट हुआ और आपके चेस्ट में आके खत्म हो गया. दिस इज अ साइकिल of the flow of the energy for the meridians. So this is a pathway of the our meridians. So and DV meridian is also called on the governing vessels, which brings midway between the tip of the coccyx bone and the anus, with points DU1 or the GV1 or the Y. With the patient lying prone pose, it extends in the middle upward inside the spinal column of the nape of the neck and the assets of the vertex. It descends the nose bright along the forehead. Then to upper lips, it ends the tibial frontal point of the DU28 in the upper lips. The Ren meridian or the CV meridian is called on the conceptional vessels. This is also X meridian. Governing vessels is called Y and CV is X, which brings at the point of the Ren 1 on the midline between the male anus and the scrotum. It starts between the anus and the posterior labial commissions in the female. It later ascending anterior to the pubic region along the middle line of the abdominal. It forces upwards and the reach to the throat. It ends Ren 24 in the depression of the center of the mentolabial growing region. This region is called the chin region. So these are the 12 meridians. These are the commonly pathway of the our meridians. तो ये जितनी भी हमारी मेरिडियंस हैं, कुछ हाथ में से शुरू हुई, कुछ चेहरे से शुरू हुई, कुछ पैर से शुरू हुई. दिस इज द पाथवे ऑफ द आवर मेरिडियंस. ईच मेरिडियन हैव on their functions on number of the points. So first we will discuss in the lungs meridian. The commonly lungs meridian symptoms is related to
few common symptoms in related to our lungs channel. You can also read treatise 2 in detail for the lungs channel and the all others channel. So lungs meridian is yin meridian. The number of points is 11 points in the lungs meridian. Commonly indication with the lungs meridian, this is also related to commonly in our related organ in the heart, lungs. It is located in the chest and it is the highest among the internal organ. The function of the lungs mainly depends on the propelling and the fixing of the function of the lungs Q and on the moisturizing function of the lungs yin. It is leo connecting to the few organ, large intestine. Few organ is yang organ, right? And the lungs maybe dominate the Q and the manage the regulation of the water passage and the govern the skin. The main task the skin is to protect the body, excretate sweat, and adjust the body temperature. The lungs govern to hair. Example, the lungs has its external manifest on the hair. The lungs open into the nose for the smelling. This is a common character in the lungs organ. Now we discuss in the lungs meridian. Commonly, lungs meridian few character is related to our lungs meridian, lungs channel. The first thing, lungs meridian is a yin channel with the 11 points. The common symptoms with the lungs meridian, chilliness, fever, headache, allergic asthma, nasal obstruction, dyspnea, throat problem. So this is the pathway of the lungs meridian. The pathway of the lungs meridian is total 11 points. Each point has on their specific functions, but you can first note down the first point of the lungs and the second point and last point of the lungs. This is the first and last point, law of the first and last point. The lungs one is situated lateral and the superior to the sternum in the lateral side of the first intercostal space. This is also 6 cone lateral to the range channel, 1 cone below the LU2, or LU1 should be indicates the cough, cold, wheezing, asthma, fullness of the chest, as well as local problem of the lungs related problem, chest related problem. So this is the lungs 1 point. This is the lungs 1 point in the physical body. And the last point of the LU11 is the lateral side of the thumb. This point is located on the extensor of the aspect of the thumb at the junction of the line draw along in the radial border of the nail at the base of the nail approximately 0.1 cone from the corner of the nail. Commonly symptoms is related to lungs 11, sore throat, cough, asthma, epistaxis, fever, loss of the consciousness, mania, and pain of the thumb. The last point of this yin meridian, this point is also called on emergency point, Zingwell points. This is also used for the common disease. And the next slide is related to our Byol meridians. So now we are compare with the physical meridian and the Byol meridian. Both meridian are the different meridians. Both meridian are the different pathways. So first, we discuss the physical meridian and the metaphysical meridian. Most of all, our colleagues are working in the Byol meridian, right?
but you don't know about the physical meridian, so you cannot find out the physical locations. अभी जब तक आपने फिजिकल बॉडी को नहीं देखा है, आप मेटाफिजिकली अगर ट्रीट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम एग्जैक्टली लोकेशन को लोकेट कर पाएंगे, राइट? किसी भी चीज को देखने के लिए आपको उसको फिजिकल देखना जरूरी है, तब आप उसका इमेजिनेशन कर सकते हैं, मेटाफिजिकली इमेजिनेशन कर सकते हैं, राइट? So we have two type of the meridians. In the first meridian is the TCM, traditional Chinese meridian are the methods. So our lungs meridian is the lateral side of our arm, and the same in our index finger towards the thumb side. This is our yin side. This index finger is represent our the hand, and the yin side of the this finger to the lateral side of the thumb. This area is related to our lungs channel, right? हमारे पास दो चीजें हैं, एक फिजिकल पाथवे है, एक मेटाफिजिकल पाथवे. Which is the best pathway of the TCM? TCM or the Byol? Both are the very good. You don't worry about the confusion कि चाइनीज अच्छा है या Byol अच्छा है, दोनों अच्छा है. It's depend on the situation. आपके पास कहीं ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपको फिजिकल पॉइंट्स यूज करना है, यू कैन यूज द फिजिकल पाथवे. अभी आपके पास कहीं ऐसी सिचुएशंस है जहां पर हम फिजिकल पॉइंट्स को यूज नहीं कर सकते हैं, तो दैट टाइम यू कैन यूज द मेटाफिजिकल मेथड, राइट? बट इफ यू वांट द expert in the TCM, you can also learn the TCM meridian. This is a good way of the learning. तो जब हम फिजिकल पाथवेज को फाइंड आउट करेंगे तो हमें समझ में आएगा, बिकॉज आपके पास जब पेशेंट आता है वो आपको लोकेशन बताएगा कि मुझे यहाँ पर पेन है, इस जगह पेन है, हियर दिस एरिया पेनफुल. सो दैट टाइम यू कैन फाइंड आउट द कि वहां पर जो पेन है, जहां पर कहीं कोई ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो दिस इज रिलेटेड टू एनी मेरिडियंस. अभी वो मेरिडियंस कहाँ है, किस पाथवे से जुड़ा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलरली एक मेरिडियंस को पढ़ने की आदत डालिए. यू कैन डेवलप ऑन योर हैबिट्स इन द लर्न वन मेरिडियन इन द एवरी डे. और हर मेरिडियंस के दो ही चीजों को हमें फर्स्ट डिस्कस करना है कि मेरिडियंस के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, और उसकी मेरिडियन का जो ऑर्गन है उसके फंक्शंस क्या है. तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि लंग्स क्या है, लंग्स के फंक्शंस क्या है, कैसे काम करता है. अभी आपके पास दूसरा लंग्स का ऑब्जेक्ट आ गया कि लंग्स की जो हमारी चैनल्स हैं, पाथवेज हैं, उसके सिम्टम्स क्या होंगे. अभी कॉमनली जो सिम्टम्स थे वो लंग्स ऑर्गन के भी थे, लेकिन जब कॉमनली लंग्स मेरिडियंस हाइपर एक्टिव हो जाएगा या हाइपो एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, कफ होगा, कंजेशन होगा, हैवीनेस इन द चेस्ट होगा, ब्रेथलेसनेस होगा. दिस इज अ कॉमन सिम्टम इन द related to lungs. And after that you can learn the every points of the each meridian. It is just like example of the LU1. LU1 is near to our collarbone, and this point is commonly we are using the edema in the chest. Also this is good point for the cardiac problem and the pulmonary problem, respiration problem. This is very good. But you can also select the other points. It is related to Byol. The Byol meaning is the smallest meridian. TCM is the big meridian in our full body, and Byol is the smallest pathway of the meridian. अभी दो चीज हो गई कि एक फिजिकल मेरिडियन है, एक मेटाफिजिकल है. फिजिकल मेरिडियन is just like our whole body. They are just moving the whole body, and the Byol meridian इन अवर पाम, आपके हाथ में, पाम में कहीं पर भी ये मेरिडियंस हो सकती है. और ये जो मेरिडियंस हैं, इन मेरिडियंस की फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि these are the two fingers is related to our upper extremities and these are the lower extremities. If you see your diagram, two fingers in the Byol diagram. Index finger for the represent your arms or hand. Middle finger is represent your legs, right? And this is your one side of the body. This is your lower abdomen area, chest area, and after that your thumb. Thumb is also, you can see the Byol meridian in the half side. So this is your one side of the your body. In the front side of the meridian, yin meridian, and the back side is the dorsal region of the your yang meridian.
हमारे पास दो तरह की चीजें मिली, हाथ में आगे की तरफ यिन मेरिडियन, पीछे की तरफ यांग मेरिडियन। अब ये जो एक उंगली है, इस एक उंगली पर 3 यिन मेरिडियन है और इसी उंगली के पीछे की तरफ भी 3 यांग मेरिडियन है। सेम थिंग इन आवर फिजिकल बॉडी, द फ्रंट इन द आवर palmar side 3 yin meridian and the dorsal side is 3 yang meridian। जो फिजिकल हमें मिला उसी फिजिकल को हम फिजिकल ट्रीटमेंट ना देते हुए हम मेटाफिजिकली यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं, राइट। कॉमनली हम कैसे यूज करते हैं ब्यूअल मेरिडियंस को, हमारी इंडेक्स फिंगर में लंग्स, आउटर साइड इज द लंग्स, सेंट्रल लाइन इज पेरिकार्डियम, इनर साइड इज हार्ट, राइट। एंड आवर मिडिल फिंगर is liver, spleen, and lateral side is kidney. You can also find this two finger. This is our lateral side. Okay, so this meridian is lungs, central line is pericardium, and inner side is our heart, right? You can also find your ring finger. आप अपने रिंग फिंगर पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टूवर्ड्स स्मॉल फिंगर की तरफ यहाँ जो मेरिडियंस होगी वो कौन सी होगी, लिवर, सेंट्रल लाइन, स्प्लीन एंड टूवर्ड्स मिडिल फिंगर किडनी। आप अपनी इन बियोल मेरिडियंस को कहीं पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने बियोल मेरिडियंस को अपने डायग्राम में देखा है तो जस्ट एक बार देखिए। This is your Byol diagram. Palmar region is the yin side and dorsal region is yang side, right? 3 yin channel, 3 yang channel in the upper extremities hand. The same thing in the 3 yin and 3 yang in the lower extremities. अभी आपके पास सारी मेरिडियंस के जो पाथवे हैं वो दो तरीके से हमें मिल रहे हैं। एक पाथवे हमारा फिजिकल बॉडी, दूसरा मेटाफिजिकल। और जब आपके पास पेशेंट आया तो फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट द फिजिकल लोकेशन। आपको पहले उसकी फिजिकल लोकेशन को फाइंड आउट करना है कि फिजिकली उसे प्रॉब्लम कहाँ है। सपोज आपके पास पेशेंट आया एंड ही टोल्ड यू कि मुझे यहाँ टेनिस एल्बो हो गया, पेन हो रहा है, तो विच इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ द टेनिस एल्बो, TWT is the best point for the tennis elbow, and you can find out the tennis elbow points in the Byol this area, right? हमें कहाँ मिला कि वो पॉइंट हमें फिजिकल पता था, तो यहाँ हमें फिजिकली पता था कि दिस एरिया इज रिलेटेड टू अवर ट्रिपल वार्मर मेरिडियन एंड द इंडेक्स फिंगर इज अ यांग साइड, दिस इज अवर आल्सो कनेक्टेड विद द ट्रिपल वार्मर, राइट? In the same you can use the first and the last point as per the treatise 1 law of the first point and the last point. If anyone is suffering in the first point, that time you can treat the last point. If anyone is any problem is related to last point, you can treat the first point. मान लीजिए हाथ के अंगूठे में नमने से tingling sensation है, so this is the last point of the LU11, so that time you can treat the LU1. और जब कॉलर बोन के नीचे की तरफ यहाँ पेन आ रहा है तो दिस इज द LU1 पॉइंट, यू कैन आल्सो ट्रीट द LU11। तो जब पहले पॉइंट्स पर प्रॉब्लम है हम लास्ट पॉइंट को ट्रीट करेंगे, और लास्ट पॉइंट पर तकलीफ है तो हम फर्स्ट पॉइंट को ट्रीट करेंगे। क्लियर? दिस इज लॉ ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। तो दिस इज कॉमनली वी आर यूजिंग द lungs meridian, lungs channel. So lungs meridian have 11 points, but you can select the most important 5 points in related to each meridian and each elements. हर मेरिडियन जो है हमारा फिजिकली 5 एलिमेंट से मिलकर बना है और हर मेरिडियन में 5 एलिमेंट पॉइंट्स होते हैं। द पॉइंट्स नेम इज वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, दिस 5. So you can find the 5 point in the also physical body, or you can find this 5 points in the your Byol meridian. अभी आपके पास दोनों रास्ते हैं कि हर मेरिडियन में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं तो हम उसको याद ही नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होता है याद करने में। हर मेरिडियंस और इतने सारे पॉइंट, there are 361 पॉइंट इन द TCM, तो बड़ा मुश्किल है।
सेमेस्टर 1 में आके तो लगता है कि भाग जाया जाए, है ना, कितना सारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने एक मेरिडियन में 5 पॉइंट को फाइंड आउट किया तो 12 मल्टीप्लाई द 5, दिस इज कॉल्ड द 60 पॉइंट. So they are called the 60 commanding point or the 60 energy points. तो हमें 60 पॉइंट्स को याद कर लेना चाहिए. नेक्स्ट क्लास में हम 60 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे उन पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करना है, और जिसको आप प्रॉपर चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट, तो आपको याद हो जाएगा. तो यहाँ हमें मेरिडियंस में मिला कि लंग्स में भी 5 एलिमेंट्स एंड ईच मेरिडियन हैव ऑन 5 एलिमेंट्स. अभी आपको कितना पढ़ना है? बहुत सिंपली, जस्ट यू कैन रीड द ईच एलिमेंट, कैरेक्टर ऑफ द वुड, कैरेक्टर ऑफ द फायर, कैरेक्टर ऑफ द अर्थ, वाटर और अदर्स. तो वहां आपने देखा कि वुड का कैरेक्टर्स क्या है, फायर का कैरेक्टर्स क्या है, वो लंग्स के साथ जुड़ा है. तो जस्ट उसी पॉइंट्स को यू कैन सिलेक्ट फॉर द टोनिफिकेशन और द सेडेशन. आप क्या करेंगे? उसी एक पॉइंट को लंग्स मेरिडियन के साथ टोन कर दीजिए या सेडेशन कर दीजिए. अभी आपकी स्माइल से दिख रहा है कि कैसे कर दे. बोल तो मैं देता हूँ, बाद में समझ में नहीं आता है ना. ऐसा भी किसी की स्माइल से मुझे लग रहा है. तो जब बहुत दिन तक पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आफ्टर दैट यू कैन लर्न. बट यू कैन सिलेक्ट द सिंगल पॉइंट्स. इफ एनीवन इज सफरिंग इन दिस विंटर सीजन इन द रनिंग नोज और द कोल्ड, so commonly you are selecting the lungs channel, right? You can select the only one channel, one point. If patient are the complaining the running nose, the running nose is water. You can select the points of the lungs meridian. First, you can select the lungs meridian, and water point of the lungs meridian is LU5. This point is increase or you decrease this point. Maybe decrease the function. अभी बहुत सिंपल सा फंक्शन मिला आपको कि आपके पास कोई आया, उसको सर्दी हो गई, रनिंग नोज हो रहा है, और आप एक सिंगल पॉइंट को ट्रीट करेंगे, लंग्स चैनल को. लंग्स को फिजिकली ले लीजिए, LU5 या बियोल कर लीजिए. अभी जितने हमारे आसपास के साथी हैं उनके लिए शायद बियोल मेरिडियन ज्यादा इजी है रादर देन TCM. मैं दोनों पे काम करता हूँ, है ना. तो जहां जैसी सिचुएशन है, बट यू कैन सिलेक्ट द बियोल मेरिडियन. हम बियोल मेरिडियन को सिलेक्ट किया और इंडेक्स फिंगर के लेटर साइड के कॉर्नर पर यहाँ यदि पीला मैग्नेट आप लगा दें, येलो मैग्नेट लगा दें फॉर द सेडेशन, तो दिस इज वेरी गुड ट्रीटमेंट. अभी आपको लगता है कि नहीं, रनिंग नोज बहुत ज्यादा है, मैं रनिंग नोज के लिए 5 एलिमेंट साइकिल को यूज करूं, तो वाटर इज कंट्रोल्ड बाय द विच एलिमेंट? यू कैन यूज चेक बॉक्स, earth element, right? You can select the one point in the lungs meridian. This is earth point. अभी लंग्स का अर्थ पॉइंट कोई बोल सकता है कौन सा होगा? LU8. LU8. LU9. LU8 और LU9? LU8 सर, LU8. LU8 11, 10, 9. 9 होगा सर, 9. सॉरी, अर्थ पॉइंट चाहिए. LU9. LU9. सॉरी. तो LU9 जो है अर्थ पॉइंट है, राइट? सो LU9 को आप क्या करेंगे? 25. ओके, तो 2 पॉइंट से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं. मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन. थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा. लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत हैक्टिक हो जाएगा. तो यू कैन सिलेक्ट द ईच मेरिडियन ऑन एनर्जी पॉइंट्स. तो दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट. नेक्स्ट मेरिडियन. Sir, please explain how do we find out this element's point? This time simply we are find the person is suffering the running nose. Okay, right? Running nose is which element? Water. अभी पानी बह रहा है, water is excess, तो पानी को और बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, राइट? हमने वाटर को कम कर दिया. अभी या तो हम वाटर को कम कर दें डायरेक्टली बाय द LU5, या फिर एज पर द 5 एलिमेंट साइकिल, कंट्रोल साइकिल से वाटर को कौन कंट्रोल करता है? अर्थ कंट्रोल करता है. हमने यहाँ अर्थ का लंग्स का 9 नंबर अर्थ पॉइंट को 25 कर दिया. 2 पॉइंट से आप लंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं. सिंपल हो सकता है. तो दिस इज वेरी इजीएस्ट मेथड. Any question, any doubt, you can ask.
कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? दिस इज राइट, गुड, थैंक यू। मतलब आपको समझ में आया ना कि हम 1 पॉइंट 2 पॉइंट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट, Sir, can we use fire here? yes, you can also use the fire, but fire is controlled water or not? Not. So as per the TCM 5 element cycle, we are using, sir, earth element. But you are also right. It is different theory, right? I will explain you. अभी हमने बोला कि पानी को कंट्रोल करना है तो फायर से यूज कर सकते हैं। अभी वाटर इज अ कंट्रोलर ऑफ द फायर, राइट? एज पर द 5 एलिमेंट थ्योरी, वाटर इज अ कंट्रोलर ऑफ द फायर। लेकिन जब आग को बुझानी है तो बहुत सी बार पानी से आग नहीं बुझती। बुझती है क्या? नहीं बुझती है। थोड़ी आग होगी तो बुझ जाएगी, लेकिन इफ फायर इज एक्सेस, अब तो क्या होगा, वहां पर एक उल्टा साइकिल चल जाएगा। तो फायर भी वाटर को कंट्रोल करता है। दिस इज ऑल्सो राइट थ्योरी। सो यू कैन ऑल्सो यूज एल्यूटेन 25। जब आप फायर को बढ़ा देंगे तो वाटर अपने आप कम हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी। ये हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह के विजन्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, लेकिन अभी हमें बेसिक कंसेप्ट को यूज करना है। जो सेम एलिमेंट्स हैं उसको इंक्रीज कर दें, या 5 एलिमेंट थ्योरी एज पर द क्रिएशन साइकिल और कंट्रोल साइकिल यूज करिए फॉर द सेमेस्टर 1। आफ्टर दैट यू कैन लर्न मेनी मोर, सो यू कैन ऑल्सो यूज द अपोजिट साइकिल, एंटी क्रिएशन साइकिल। और जब एंटी क्रिएशन साइकिल यूज करेंगे, एंटी क्रिएशन साइकिल इज ऑल्सो मेंशन इन आवर ट्रीटाइज 2, यू कैन ऑल्सो लर्न। तो वहां पर हमें एक सिस्टम मिला, और मुझे लगता है कि आपको एक कंपैरिजन समझ में आया होगा कि कैसे हमने दोनों को कंपेयर किया, फिजिकल मेरिडियंस को और ब्योर मेरिडियन को। द नेक्स्ट मेरिडियन इज अवर सर यदि लूज मोशन है तो पृथ्वी तत्व को बढ़ा देंगे और वाटर को कम कर देंगे, करेक्ट ना? राइट, एलआई मेरिडियन का कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरिडियन is large intestine. Large intestine is our yang channel with 20 points, and the starting point of the large intestine is Li1, is located in the dorsal aspect of the index finger at the junction of the line draw along the radial border of the nail, and the nail weighs approximately 0.1 कून from the corner of the nail. हाथ उंगली का जो कॉर्नर है, नाखून का जो कॉर्नर है, वहां पर Li1 मिलने वाला है। और Li1 का जो चैनल है, it goes to pathway for the index finger to dorsal side of the palm, and after that it goes our arm, and this is to our neck area. After that it goes to our nose, and the last point of the large intestine is Li2020. This is the last point of the large intestine. Commonly function of the Li1, we are using the Li1 points for the this is very good point for the Zingwell points, emergency points, toothache, sore throat, swelling of the throat, or numbness of the finger. This is very important functions of the Li1. And last point of the Li2020, location of the Li20 is the at the nasolabial groin region, at the level of the midpoint of the lateral border of the alia nasi. So this is the last point of the Li2020. Commonly symptoms of the nasal obstruction, sinusitis, epistaxis, rhinitis, swelling, itching of the face. So this is the commonly we are using the Li2020 points. And large intestine, the main function of the large intestine is absorption.
The large intestine, the main function of the absorption of our food. So commonly symptom is related to large intestine, digestion related problem, diarrhea related problem, or throat related problem, constipation related problem. You can also note down the few other points. It is the primary functions. It is to receive the waste material from the small intestine and to absorb any remaining good fluid while transforming the remaining waste into the face. The function of the large intestine is to receive waste material, that is the sent down by the small intestine, absorb its fluids, contents, and from the what is the left excessor of the secretions. The role of the body organ is essential in the help eliminating waste from the body, thus protecting the body from the accumulating of the toxins. Therefore, according to traditional Chinese medicine, of the qi of the large intestine needs a constantly move the forward in order to move the waste draw for the excretion. This on the mental level of the healthy large intestine may represent one's ability to go the past and easily move forward with the one's life. And common symptoms is related to large intestine, all head related problem, all ENT related problem, including the toothache. This is also related to fever, sore throat, laryngitis, pharyngitis, influenza, other neuralgia is related to especially in the face. And the commonly symptoms is related to large intestine, constipation, abdomen pain, colitis. This is a common symptom. This is the pathway of the large intestine. LI1. Pooja ji, please mute your volume. And this is the Byol Meridian in the yang side of the index finger. दो तरह की मेरिडियंस के पाथवे अगेन आपने फाइंड आउट किए. पहला लार्ज इंटेस्टाइन हाथ की इंडेक्स फिंगर के पीछे की तरफ नेल के कॉर्नर से स्टार्ट हुई और यहां से ये हाथ के पीछे की तरफ से होते हुए एल्बो से होते हुए आर्म से होते हुए शोल्डर से होते हुए आपके फेस पर आकर नोज के लेफ्ट साइड में खत्म हुआ. अभी दूसरा इसका बियोल का जो फ्लो है, द सेम इन द बैक साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर, इन द लेटर साइड ऑफ द थंब, पीछे की तरफ से ये शुरू हुआ और यहां से ये घूमकर हाथ के अंगूठे पर आके लास्ट पॉइंट फिनिश हो जाता है. तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके 20 पॉइंट्स हैं टोटल. अभी नेक्स्ट मेरिडियन इज हार्ट मेरिडियन. हार्ट मेरिडियन is 9 point in the heart meridian. It's 1 minute. Few symptoms is related to our heart organ. The heart is seen as the emperor of the role of the overall the all others organ. Store in the soul, usually translate is the mind, govern the blood and the vessels meridians, opening into the tongue, the heart open in the tongue, reflect in the facial complexion, governs joy. The heart function is said to be strongest between 11 am to 1 am. Physiology of the heart controls the circulation and distribution of the blood, and there or all other organs depend upon on the substance throughout the emotional influence and of the function of the various organ via pulse and the blood pressure, which are the controlled by the heart where the emotion arise. Long-term memory, thinking, emotions, intimacy, congenitions,
intelligence, ideas are dominating by the function of the heart. The heart is sometimes called the supreme control of the all yin and yang organ. The heart houses the body's spirit shen. The heart dominates sleep. If the heart is strong, the patient will fall asleep easily and the sleep sound. If the heart is weak, patient mind will float, resulting in an inability to fall asleep, disturb sleep, or excessive dreams. Sweat is the fluid of the heart. The heart is a fire organ and it is the represent the almost yang. This means that is the greatest peak of the yang energy. The heart meridian is start from the same location in our chest area. The heart channel is also called the hand yin meridian channel, which is the after getting at the connection from the spleen channel start to the with point H1 in the center of the axilla. Then it goes along the posterior border of the medial aspect of the upper arm. Next, passing throughout the cubital region H3, it descends the placiform area proximal to the palm H7 entire its. Then it ends the medial aspect of the tip of the little finger at the H8. It is lateral connection with the small intestine channel. The important functions of the heart meridian are common symptoms is related to our heart meridian is heart meridian is yin channel with the 9 points. The common symptom is related to heart meridian, angina, chest pain, headache, insomnia, depression, or any problem is related to tongue or the speech. This is also related problem to the respiration related disorders, cardiac disorders. So H1 is called on the lymph of the heart. This is a very important point of the heart, and this is very good function for the sadness, anxiety, and depression. H1, and the last point of the H9. This is a Zingwell point. This is also wood point, or this is also wind point. This is very good point for the laryngeus points are depression, anxiety, sudden changes of the mood, or the swing of the mood. And this is also very good point for the palpitation or pleurisy. Heart meridians related other different symptoms: sleeplessness, heart problem, depression, chest pain, respiration disorders are related to high BP or the low BP. अभी हार्ट के लिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं, and the first is H1 and last point is H9. H9 is also single points, emergency points. The all meridian in the first or the last point is related to finger, near to fingers or near to toes. They are called on the Zingwell points. They are the points we are using for the emergency condition. जितनी भी मेरिडियंस के फर्स्ट या लास्ट पॉइंट हमारे हाथ की उंगली के पास या पैर के टो के पास है, वो हर पॉइंट्स हमारा एक इमरजेंसी पॉइंट है. जिंगवेल पॉइंट्स के रूप में हम उसको यूज करते हैं. अभी सेम मेरिडियंस आपके पास 3 मेरिडियंस हैं. तो पहला मेरिडियंस हमारे पास लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट इज हार्ट, एंड द नेक्स्ट इज ट्रिपल वॉल. Heart and small intestine. Small intestine is also yang channel. The first point of the SI is near to small finger, and this goes to lateral side of our hand, and this area is go to upper arm and here to our ear. Small intestine में total 19 points हैं.
और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फंक्शंस हैं कॉमनली हम यूज करते हैं डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। जितना भी तरह का डाइजेशन का प्रॉब्लम है उन सब प्रॉब्लम में हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कॉमनली यूज करते हैं। आर related to acute lumbar strain, colitis, constipation, headache, you can also use. But you can also use note the few function of the small intestine. Just 1 minute. The small intestine connects with the stomach, and its main function is to further purify the nourishment that was partially digested by the stomach from the tuberide into the clear substance. After purification, it transports the clear substance throughout the body while expelling the turbide. The small intestine function, it controls receiving and the transforming its spare fluids. The small intestine officially is now is the separation of the pure from the impure. It is the blood brother to the heart. This official is also called the transform of the queen, and also now as its job to separate what is the pure from the dead, which is the impure. This is official extract pure essential from the food we eat, so it can be used to nourishment the body, mind, spirit, and the send impure remainings of the elements. So this is a common function is related to our small intestine. And the common symptoms is related to small intestine, shoulder pain, arm pain, neuralgia. So this is very common points. You can also treat the 19 point in the small intestine and see the Byol Meridian location. This is common symptoms are indications to small intestine, headache, constipation, anemia, and especially vitamin D and B12 deficiency. You can treat this SI. For the poor memory, pain around in the navel, ear problem, or the upper jaw. This is the pathway of the small intestine. Lateral side of the ear is the last point of the SI19. And next meridian is pericardium. Pericardium meridian is related to our brain. The function of the pericardium or this organ it is an approxy organ the surrounded the heart like tissue to protect the Zong theory status that is the heart is the monarch organ and the cannot be directly attacked by the pathogenic factors. Guide joy and pleasure, it has Leo connecting to the triple warmer. If pathology factors directly involve the heart, it will be distribute the heart, spirit, and their life. For the example, the symptoms of the high fever, coma, delirium, exogenous febrile disease, and described as inversion of the pathology factors into the pericardium in the TCM. Commonly, जो pericardium है, उसको हम हार्ट का कवरिंग के रूप में जानते हैं, लेकिन pericardium is a part of the, as per the TCM theory, part of the brain. So commonly indication is related to pericardium meridian is mental disease, depression, pain in the chest, ribs, coronary artery disease, ER, abnormal emotional related problem. Pericardium meridian is on 9 points total. The pericardium meridian is very useful
for the emotional problem. All problem is related to emotional. You can treat the pericardium meridian. Common other symptoms is especially in the mania. You can also treat the manic disorders, pericardium, dreams with the sleep. You can also treat the both meridian, heart and the pericardium. The pericardium one is the front shoe point of the alarm point of the pericardium meridian. This is the first point of the pericardium meridian. This is also meeting point of the pericardium meridian with the kidney and the gallbladder meridian. The other function is pericardium, palpitation, irritability, abnormal pain, vomiting, pain, chest, or the tremor. You can also use the pericardium channel. The pericardium channel is also called the yin channel, which after the getting the connection from the kidney channel begins with the point P1 in the chest, lateral to the nipple. It then ascends the axilla fossa, run along the upper arm medial aspect, passing throughout the cubital fossa P3. It goes the further down to the forearm between the tendons of the palmar trunks in the flex carpi radialis P7, enters the palm, passes along the middle finger, it tips of the P9 is a lateral connection with the this point. Commonly P9 points में लोकेशंस को लेकर बड़ा डाउट है और मोस्ट ऑफ ऑल कॉमन टेक्स्ट बुक जो TCM की हैं, अगर हम अपनी बुक्स को देखें तो पेरिकार्डियम का लास्ट पॉइंट जो है हमारा मिडिल फिंगर है, राइट, एंड इट इज टुवर्ड द इंडेक्स फिंगर साइड. तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पॉइंट है नेल के कॉर्नर पर है इंडेक्स फिंगर की तरफ, बट एज पर द अदर मेनी मोर TCM बुक्स दिस इज द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर. The tip of the middle finger is the P9 point, right? तो अभी जब भी आप बुक्स को देखेंगे, वेरिएशंस देखेंगे, तो कॉमनली बुक्स में आपको P9 जो है मिडिल फिंगर की टिप्स में मिलेगा, बट अदर पॉइंट्स इज नियर टू नेल. हमारे सारे TCM के सब पॉइंट्स हमारे नेल्स के कॉर्नर पर हैं, लेकिन दिस पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? ये टिप ऑफ द मिडिल फिंगर. तो दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ द P9. तभी हमने 3 मेरिडियंस को देखा, लंग्स को, पेरिकार्डियम को, हार्ट को, लार्ज इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, and the last meridian is related to our upper extremities, hands, and this is name is a triple warmer. Triple warmer meridian is a three warmer. Triple warmer is yang channel. The number of points is the 23 points. Triple warmer is a 3 part of the our body: upper warmer, middle warmer, and the lower warmer. Upper warmer is related to head to chest, middle warmer chest to navel, and the lower warmer navel to our toes. Common symptoms is related to triple warmer meridians: headache, especially temporal region, conjunctivitis, facial problem, toothache. All digestive related problem are the intestinal related problem. Triple warmer is also our spinal meridian. Triple warmer is called our spinal meridian. Pericardium is brain and triple warmer is spinal. You can also note down the few symptoms is related to triple warmer organ and the meridians.
The name of the triple warmer is Shenzhou. ट्रिपल वार्मर को शेंजियो के नाम से भी जानते हैं. जितने भी आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे चाइनीज, तो दे मेंशन द नेम ऑफ द ट्रिपल वार्मर इज Giao, Shenzhou or SJ Meridian. This is SJ Meridian. The Shenzhou channel is also called the hand yang channel, which after getting at the connection from the pericardium channel brings with the point TW1 at the tip of the ring finger. It everts upwards between the fourth and the fifth metacarpal bone along the dorsal side of the wrist, SI4, and the lateral side of the forearm between the radius ulna and the base throughout the occasion, SI10. Then it runs along the lateral aspect of the upper arm and the recess of the shoulder region in the crossing SI14. Over the shoulder, it enters the suprascapular fossa, then ascending the neck, running along with the posterior border of the ear. Sorry. I'm explaining the SI1, sorry. And the last point of the triple warmer meridian is TW23 is located the depression at the lateral end of the eye elbow. This is the last point of the TW23. Commonly symptoms is TW related headache, redness, pain of the eyes, blurred vision, twitching of the eyelids, and the toothache, facial paralysis. So SI1 is start the lateral side of our ring finger, and the last point of the TW23 is the depression of the lateral end of the eyebrow. This is the last point. So again, we look at the all points. The first point is LU1, and this is the last point of the LU11. First point of the large intestine 1, last point of the large intestine LI20, the first point of the triple warmer TW1 in the lateral side of the ring finger, and the last point of the TW23, first point of the SI1 in the lateral side of our small finger, and the last point of the SI19, and the pericardium is the first point in our near to the chest area, and the last point in the center of our middle finger. So maybe lungs, pericardium, all. तो मुझे लगता है कि हमने most of all points की locations को locate किया. This is the first and the last point. As per the law of the first and last point, any problem with the first point, you can treat the last point. Any problem with the last point, you can treat the first point. हम पहले पॉइंट पर तकलीफ होने पर लास्ट को ट्रीट करेंगे, लास्ट को तकलीफ होने पर फर्स्ट को. Tomorrow we will discuss the all our lower extremities point is related to liver, kidney, spleen, stomach, gallbladder and the urinary bladder. अभी आज हमने कुछ अपर एक्सट्रीमिटीज की यिन यांग मेरिडियंस की लोकेशंस को देखा फिजिकल. कल हम पैरों की लोकेशंस को देखेंगे. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास हम इन्हीं मेरिडियंस के कुछ इंपॉर्टेंट जो 60 कमांडिंग पॉइंट्स हैं
उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम उन पॉइंट्स को याद करें और कैसे उनको यूज करें. तो शायद मुझे लगता है कि दिस इज सफिशिएंट फॉर द टुडे. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? Sir, can you kindly share the PDF of the yin and yang that was discussed the last time? Okay, I will discuss with share with the Ravindra sir. Okay, I'll share it, sir. Sir, I'm telling you, if you continue the same thing like this for next 2-3 class, all the students become expert in. Yes, They sir. now know what is 5 shoe points, where it is located, because our treatment is based on only 5 shoe points. Yes. Plus, in addition to that, we have to know what is tranquilizer point, what is analgesic point, what is distal point, what is influencer point, what is blue correcting and Z-cliff. That's all. Any disease can be treated with this. That's all. Yes, sir. TCM is only so much. You can treat any disease within this. And your explanation was so good, really, I mean, it was so simple. It was like a story. I'm really thankful to you on behalf of all the students, sir. And in spite of your being so busy, you have spared some time for us. Sir, sorry for that. I am very busy, but I am preparing for the lectures for this day. Just before the class, I am free in the 8:30 in my clinic. And after that, I am joining with you. We are all blessed to have you amidst us. Just I am trying for the... You will meet tomorrow at same time on the same Zoom meeting. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Okay, thank you, everyone. If you want, you can continue the question Thank answer you, sir. session for a couple of minutes if Thank you, anybody sir. has got any questions. Thank you, sir. Okay, thank you. So for the patient with cold and cough has pain in the ribs, which points to the treat. The main cause of the cough and cold is the congestion in the chest. So they are feeling the pain in the ribs. So that time you can treat the 2 points, LU9, and the one more is very important point. You can also treat the stomach 40, 25. This is the expel the cough. ये कफ को बाहर निकाल देगा क्योंकि वहां कहीं कोई कंजेशन है. So you can treat these 2 points. LU9 also 25, sir. Stomach 40 is 25, sir. LU9? LU9 is the earth point. कफ है तो उसको just sedate कर दीजिए, कम कर दीजिए. Okay. You can sedate the... Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Okay, thank you very much.